Hello everyone, my name is Abhishek Nagdev, and in this video we are going to be covering the theory of the chapter solid state. Students, this is an amazingly interesting chapter और इसके concepts बहुत आसान है. आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा. So without wasting any more time, let's begin with the first slide. So students, solids are packed in different forms. Solids are arranged in different ways, and the first type of the arrangement of solid is simple cubic unit cell. Students, simple cubic unit cell is a cell in which atoms are present only at the corners of the cell. Students, we know that there are 8 corners of a cube and atoms will only be present at the 8 corners of this cube. Guys, इसी को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. अब स्टूडेंट्स, जो ये कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं दे ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 1/8 इनसाइड द सेल. सो आप यहां पे कैलकुलेशन देख सकते हो दैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन सेल इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 विच इज इक्वल टू 1. गाइस, इसी को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं. सो टू समराइज, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज अ सेल in which 8 atoms are present at the 8 corners of the cube, और ये जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं दे ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 1/8 इनसाइड द सेल. सो इसीलिए स्टूडेंट्स, इसका जो z इफेक्टिव का कैलकुलेशन आएगा इट विल बी 8 इंटू 1/8 विच इज इक्वल टू 1. सो गाइस, आपको ये समझना जरूरी है दैट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज नॉट अ वेरी एफिशिएंटली पैक्ड सिस्टम. इसका पैकिंग एफिशिएंसी इतना ज़्यादा नहीं है. इसका मतलब यह है दैट इफ अ सॉलिड इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होंगे बिटवीन द एटम्स. गाइस, इन दिस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, एंड ये जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8. So therefore, Z effective of simple cubic unit cell is 8 into 1/8 which is equal to 1. Now guys, we will go ahead to the next slide in which we'll learn about BCC unit cell. Yes people, in this slide we are going to look at the second arrangement of solids which is BCC unit cell. Guys, the full form is body centered cubic unit cell. Guys, as you can see in the diagram, in this type of cell, 8 atoms are present at the 8 corners of the cell and there is one more atom at the center of the cube. यार देखो, इससे पहले वाले स्लाइड में जो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में सीखा है उसमें एटम्स वेर ओनली प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. Guys, in this BCC type unit cell, 8 atoms are present at the corners of the cube and there is one more atom at the center of the cube. अब guys, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, the atoms at the corners of the cube only contribute 1/8. So ये जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं इनका कैलकुलेशन होगा 8 into 1/8. And guys, the atom at the center of the cube is entirely inside the cube. तो उसको हमें पूरा काउंट करना होगा, and therefore as you can see at the bottom here the calculation is 8 into 1/8 plus 1. Guys, इसमें जो 8 into 1/8 है this is the calculation of the corner atoms, and guys जो plus 1 है that is us counting the atom at the center of the cube. So guys, इस केस में total atoms present inside the unit cell is equal to 2. That means BCC unit cell का जो Z effective आता है it is equal to 2. So guys, let me summarize this entire slide. In the BCC type unit cell, that is body centered cubic unit cell, 8 atoms are present at the corners of the cube and there is one more atom at the center of the cube. स्टूडेंट्स, जो कॉर्नर के एटम्स होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8. सो उनका कैलकुलेशन होगा 8 इंटू 1/8. एंड गाइस, द एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज काउंटेड एंटायरली. तो उसके लिए हम लोग करते हैं +1. सो देयरफॉर Z इफेक्टिव विल बी 8 इंटू 1/8 कॉर्नर के एटम्स का +1
which is the atom at the center of the cube. So the final answer for Z effective will be equal to 2. Now guys, we will go ahead to the next slide in which we'll learn about the third type of arrangement, that is FCC unit cell. Yes students, now in this slide we are going to look at the third type of arrangement of solids, that is FCC unit cell. Guys, this means face-centered cubic unit cell. As you can see in the diagram, in this type of unit cell, 8 atoms are present at the corners of the cube and 6 atoms are present at the center of each face of the cube. Guys, हम सबको पता है that a cube has 8 corners and 6 faces. तो हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वहां पे तो एटम्स डेफिनेटली होंगे एंड गाइस एटम्स विल ऑल्सो बी प्रेजेंट एट द 6 फेस सेंटर्स. अब जैसा हमने अभी बहुत बार सीख लिया है, द कॉर्नर एटम्स कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 1/8 इनसाइड द सेल. तो उनका कैलकुलेशन होगा 8 × 1/8 विच इज इक्वल टू 1. अब गाइस जो फेस सेंटर वाले एटम्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन इनसाइड द सेल विल बी हाफ. सो देयरफॉर देयर कैलकुलेशन विल बी 6 × हाफ विच इज इक्वल टू 3. गाइस आप ये दोनों कैलकुलेशन स्क्रीन पे देख सकते हो. सो इन द FCC टाइप यूनिट सेल, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, 8 atoms are present at the 8 corners of the cube and 6 atoms are present at the center of each face of the cube. हमारे कॉर्नर एटम्स का कैलकुलेशन होगा 8 × 1/8 विच इज इक्वल टू 1. एंड गाइस हमारे फेस सेंटर के एटम्स का कैलकुलेशन होगा 6 × हाफ विच इज इक्वल टू 3. सो देयरफॉर गाइस द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल विल बी 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4. इसको आप एकदम बॉटम पे देख सकते हो. So guys, in FCC type unit cell, Z effective is equal to 1 + 3 which is equal to 4. Guys, इसमें जो 1 है that is the contribution of the corner atoms and इसमें जो 3 है it is the contribution of the face center atoms. अब guys मैं आपको तीनों सेल का समरी दे देता हूं. In the first slide we had learnt about simple cubic unit cell. गाइस उसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब और उसका Z इफेक्टिव आता है 1. आफ्टर दैट गाइस वी लर्नड अबाउट BCC यूनिट सेल इन द नेक्स्ट स्लाइड. इन द BCC यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड 1 एटम इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर. गाइस उसका Z इफेक्टिव आता है इक्वल टू 2. एंड नाउ गाइस इन दिस स्लाइड वी हैव लर्नड अबाउट face-centered cubic, that means FCC unit cell, and in this cell atoms are present at the 8 corners of the cube and 6 atoms are also present at the face centers of this cube. Guys, in this case the Z effective is equal to 4. So with this guys we have completed 3 major different arrangement of solids. Now let's move ahead to the next slide. Yes guys, now that we have learnt about the 3 different types of unit cells, we are going to now learn about 2 different types of effective packing. The first of this effective packing is known as hexagonal closed packing. Guys, as you can observe in this diagram, there are different layers of atoms which have been arranged. The important thing to note here is that the arrangement of different layers is of the form AB, AB, AB and so on. So basically guys, whenever you arrange atoms in a manner where the layers AB, AB, AB keep on repeating, this type of packing is known as hexagonal closed packing. Students, this is a very effective way of packing because in this case, the packing efficiency comes out to 74%. इसका मतलब students, there will not be a lot of empty space between the atoms. In fact guys, it is impossible to have a packing efficiency of more than 74% if all the atoms are of the same size. So students, ये best type का packing है. This packing is known as hexagonal closed packing
and all you have to remember is that in hexagonal closed packing, the type of arrangement of layers is AB, 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 and so on. So guys, let's move ahead to the next slide. Yes, people. Now in this slide, we are going to look at the arrangement of hexagonal closed packing. Students, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, in this hexagonal closed packing, 6 atoms are present at the top corner of the hexagon, 6 atoms are present at the bottom corners of the hexagon, 2 atoms are present at the face center, that is at the top face and the bottom face of this hexagonal 3D structure. And guys, 3 atoms are present in the middle layer which is entirely inside the hexagon. मैं आपको ये फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. Guys, in the last slide we had learnt about hexagonal closed packing. जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, this is a very effective way of packing because in this case packing efficiency comes out to 74%. So guys, इसमें atoms कैसे अरेंज होते हैं इसको हमें समझना है. Guys, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, there is a hexagon at the top and there is a hexagon at the bottom. We are joining both of these hexagons to form a 3D structure. So guys, in this case, atoms are present at the corners of the top hexagon and the corners of the bottom hexagon. And apart from this, atoms are also present at the center of the top face and the center of the bottom face. And guys, other than this, 3 more atoms are present in the middle layer which is entirely inside the hexagon. So guys, this is the proper arrangement of hexagonal closed packing. As we had learnt in the last slide, the arrangement of layers is AB, 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 and so on. Guys, one more important thing to note here is that the coordination number of all the atoms in this hexagonal closed packing is 12. Guys, coordination number का मतलब होता है कि one atom is touching how many other atoms. So basically guys, in hexagonal closed packing, one atom will touch 12 other atoms. Guys, this is the reason why this packing is extremely efficient. जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, it is not possible to have a packing efficiency of more than 74% if all the atoms are of the same size. So guys, similarly, it is not possible to have a coordination number of more than 12 if all atoms are of the same size. Guys, मैं आपको coordination number का definition फिर से बता देता हूं. Coordination number tells us about how many atoms are touching one single atom. So guys, in this hexagonal closed packing, 12 atoms will be touching each atom. इसी को हम लोग coordination number बोलते हैं, and this is the maximum possible coordination number that you can have if all the atoms are of the same size. So guys, in summary, in hexagonal closed packing, the layers are arranged as AB, AB, AB. In this structure guys, 6 atoms are present at the top corner of the hexagon, 6 atoms are present at the bottom corners of the hexagon, 2 atoms are present at the face centers, one at the top face center, one at the bottom face center, and 3 atoms are present in the middle layer which is entirely inside the hexagon. Guys, the packing efficiency of this structure is 74% and the coordination number is 12. Now let's move ahead to the next slide. Yes people, in this slide we are going to learn about cubic closed packing. Students, this is the second type of efficient packing. The first one obviously was hexagonal closed packing. Students, similar to hexagonal closed packing, in this packing, that is cubic closed packing, we have a packing efficiency of 74%. इसका मतलब गाइस, ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है ये भी बहुत एफिशिएंट टाइप का पैकिंग है. गाइस, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल. अगर आपको याद है, एफसीसी मीन्स
face centered cubic, and in this type of unit cell, atoms are present at the 8 corners of the cube and 6 atoms are also present at the center of each face of the cube. So guys, ये जो हमारा FCC टाइप यूनिट सेल होता है उसी के पैकिंग को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग. इसका मतलब स्टूडेंट्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग एंड FCC यूनिट सेल. तो जो कुछ भी मैंने आपको FCC यूनिट सेल के लिए सिखाया है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर एप्लीकेबल इन क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग. इसको हम लोग CCP पैकिंग बोलते हैं. गाइस, इन दिस पैकिंग द अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इज ABC ABC एंड सो ऑन. गाइस, अगर आपको याद है, इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग द अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स वाज AB 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 एंड सो ऑन. तो अगर आप AB 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 वाला अरेंजमेंट करते हो देन इट बिकम्स हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग. बट गाइस, इफ यू अरेंज द लेयर्स एज ABC 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 एंड सो ऑन, then this packing is known as cubic closed packing. Guys, this packing is nothing but FCC unit cell, that is face centered cubic unit cell. Guys, in this type of packing, again the coordination number is 12 and the packing efficiency is 74%. जैसा कि मैं आपको अभी काफी बार बता चुका हूं, it is not possible to have a packing efficiency of more than 74% or to have a coordination number more than 12 if all the atoms are of the same size. तो बेसिकली गाइस, ये जो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग है एंड जो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग हमने लास्ट स्लाइड में सीखा, बोथ ऑफ दिस पैकिंग आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड दे आर द बेस्ट टाइप ऑफ पैकिंग. नाउ गाइस, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, now in this slide we are going to learn about voids. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया है, there is a lot of empty space between the atoms in a solid structure. Guys, ये जो empty space create होता है between the atoms, this empty space is known as a void. Now students, there are two major types of voids. The first of them is known as tetrahedral void. So guys, tetrahedral void is an empty space which is created when you arrange 4 atoms in the form of a tetrahedron. So guys, अगर आप 4 atoms को arrange कर दो, as you can see in the diagram, in such a way that the center of these 4 atoms will form a tetrahedron, then the empty space which is created at the center of this tetrahedron is known as a tetrahedral void. Guys, ये बहुत ही आसान है, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. Guys, in every solid structure there is a lot of empty space between the atoms. This empty space is known as a void. तो यहां पे हमें सीखना है that what do we mean by tetrahedral void. So guys, tetrahedral void is an empty space which is created when you arrange 4 atoms at the corners of a tetrahedral. Guys, इसको है ना आप डायग्राम में देख सकते हो. When you arrange 4 atoms at the corners of a tetrahedral or a tetrahedron, तो सेंटर में जो empty space create होता है उसी को गाइस हम लोग बोलते हैं tetrahedral void. Now the most important thing that you have to remember is that number of tetrahedral voids in any type of unit cell is equal to 2 into Z effective. Guys, इसको आप यहां नीचे देख सकते हो that they have mentioned that the number of tetrahedral voids in any cell is equal to 2 into n. Guys, n मतलब number of atoms in the unit cell, जिसको हम Z effective बोलते हैं. Guys, ये बहुत ज़्यादा important formula है and many questions are based on this concept. So guys, all you have to remember is that when an empty space is created between 4 atoms which are arranged in the form of a tetrahedron, then this empty space is known as tetrahedral void. And guys, सबसे important, number of tetrahedral voids is equal to 2 into Z effective.
Now guys, let's move ahead to the next slide in which we will learn about the second type of void, that is octahedral void. Yes people, in this slide we are going to look at the second type of void, that is octahedral void. Guys, as mentioned in the previous slide, void is an empty space which is created between the atoms. So guys, when you arrange 6 atoms in a manner that these 6 atoms are at the corners of a octahedral, then the empty space created at the center of these 6 atoms is known as an octahedral void. देखो यार, आपको बस इतना याद रखना है that if an empty space is created between 4 atoms arranged in the form of a tetrahedral, then it is known as tetrahedral void. And guys, if an empty space is created with the help of 6 atoms which are arranged at the corners of a octahedral, then this void is known as octahedral void. मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं that when a void is created with 4 atoms, it is tetrahedral void. And guys, when the void is created with 6 atoms, it is known as octahedral void. Guys, इसका डायग्राम आप यहां देख सकते हो. And the most important thing is that the number of octahedral voids in any unit cell is equal to Z effective. Guys, इसके बारे में आप यहां नीचे रीड कर सकते हो. Number of octahedral voids in any unit cell is equal to Z effective, that is the number of atoms in the unit cell. So guys, tetrahedral void वो void होता है which is created with the help of 4 atoms, and octahedral void is the void created with the help of 6 atoms. And guys, the most important thing, number of octahedral voids is only equal to Z effective, and guys, number of tetrahedral voids is equal to 2 into Z effective. गाइस, आपको ये लास्ट वाले फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करने हैं. हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 2 इंटू जेड इफेक्टिव, एंड गाइस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर जेड इफेक्टिव. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लेक्चर में अलग अलग टाइप के यूनिट सेल देखे हैं. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल. And then students, we have also looked at 2 different types of packing: hexagonal closed packing, cubic closed packing. And guys, after that we have looked at 2 different types of voids: tetrahedral voids and octahedral voids. Now students, we are going to look at the radius ratio of cation and anion. Basically guys, हमें इस स्लाइड में ये समझना है that how the ratio of the radius of cation and the radius of anion determines the coordination number. Basically guys, if the cation is too small, then you can't have many anions surrounding this cation. So guys, यहां पे आप रेडियस रेशियो का टेबल देख सकते हो. आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखना है दैट यहां पे जो हम रेशियो ले रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द स्मॉलर रेडियस अपॉन द बिगर रेडियस. बेसिकली गाइस, हम लोग रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन के वैल्यूज को देख रहे हैं. सो गाइस, एज यू कैन सी इन द टेबल, इफ द कटायन इज टू स्मॉल, दैट मीन्स इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन is less than 0.155, then the maximum coordination number possible is 2. So guys, यहां पे जो टेबल में कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है, दिस इज द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर दैट यू कैन हैव. मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं. कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू एवरी एटम. सो बेसिकली गाइस, यहां पे हमें यह समझ में आ रहा है that if radius of cation upon radius of anion का रेशियो 0.155 से कम है, then in that case maximum 2 anions can be attached to 1 cation. Guys, इस टेबल का आप मतलब समझो. इस टेबल में हमें यह समझ में आ रहा है
दैट रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन के रेशो को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि हाउ मेनी अनायंस आर अटैच्ड टू वन कटायन. So basically guys, if you look at the table, if the ratio of radius of cation upon radius of anion is less than 0.155, then the maximum coordination number possible is 2. Guys, हमें ना इस टेबल को मेमोराइज करना है क्योंकि काफी क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पे बेस्ड होता है. Let's move ahead in the table. Guys, if the ratio is between 0.155 and 0.225, then the maximum coordination number possible is 3. Similarly guys, if the ratio is between 0.225 and 0.414, then the maximum coordination number possible is 4. उसके बाद guys, if the ratio is between 0.414 and 0.732, and if it is a 2D structure, if it is a two-dimensional structure, तो maximum coordination number possible है 4. But if it is a three-dimensional structure, तो maximum coordination number possible is 6. Moving ahead guys, if the ratio is between 0.732 and 0.999, then the maximum coordination number possible is 8. And guys, अगर ratio 1 हो गया, that means if the cations and anions are of the same size, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दैट द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल इज 12. सो स्टूडेंट्स, वी जस्ट नीड टू मेमोराइज दिस टेबल. ये टेबल से हमें ये पता चलता है दैट हाउ मेनी अनायंस कैन बी अटैच्ड टू वन कटायन. इससे हमें ये पता चलता है दैट हाउ मेनी अनायंस आर टचिंग वन कटायन. सो गाइस, इफ द रेशियो ऑफ कटायन टू अनायन, if the ratio of radius of cation to radius of anion is less than 0.155, then maximum coordination number is 2. If it is between 0.155 and 0.225, maximum coordination number possible is 3. If it is between 0.225 and 0.414, then maximum possible coordination number is 4. And इसके बाद guys, एक tricky part है that if it is between 0.414 and 0.732, then the maximum coordination number possible is 6 if it is a three-dimensional structure, and the maximum coordination number possible is 4 if it is a two-dimensional structure. So guys, अगर आपका radius of cation और radius of anion का ratio 0.414 and 0.732 के बीच में आता है, then in that case, अगर 2D structure है, then maximum possible coordination number is 4. But if it is a 3D structure, then maximum possible coordination number is 6. And finally guys, the last line of this table, if the ratio is between 0.732 and 0.999, then the maximum possible coordination number is 8. और guys, इस टेबल में ये मेंशन नहीं किया गया है that if the ratio is 1, then the maximum possible coordination number is 12, because हमने already देखा है that if all the atoms are of the same size, then the maximum possible coordination number is 12 and maximum packing efficiency is 74%. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, now in this slide we will look at what is the effect of pressure on the structure of a solid. Basically guys, different types of compounds have different arrangement of atoms. Basically they have different arrangements of cations and anions. Basically guys, हमने 3 different type of unit cells देखे हैं, simple cubic, BCC and FCC. अब हर एक यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो अलग होता है, हर एक सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो अलग है. So guys, in this slide we have to look at the concept that when you increase the pressure on a solid, then the coordination number increases. Guys, इस slide में आपको बस इतना सीखना है that when you increase the pressure on a solid, तो उसका जो coordination number होता है वो increase हो जाता है. इसका मतलब guys, when you apply pressure on a solid, solid के जो atoms हैं, they try to come close to each other.
that means more atoms will touch each other, and that means the coordination number will increase. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हो, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर देन इन दैट केस NaCl टाइप स्ट्रक्चर जो होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CsCl टाइप स्ट्रक्चर. गाइस, इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है उसको आप उनके नीचे देख सकते हो. इन NaCl टाइप स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ कटायन एंड अनायन इज 6. इसीलिए गाइस NaCl स्ट्रक्चर के नीचे लिखा है 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर. इसका मतलब गाइस ये है दैट इन NaCl टाइप स्ट्रक्चर 1 Na plus is touching 6 Cl minus anions and 1 Cl minus is touching 6 Na plus cations. देखो यारो, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन समझना है. कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स हाउ मेनी एटम्स आर टचिंग वन सिंगल एटम. सो बेसिकली गाइस, NaCl का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6:6. दैट मीन्स 1 Na plus will be touching 6 Cl minus and 1 Cl minus will be touching 6 Na plus. सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास NaCl टाइप स्ट्रक्चर है एंड इफ यू इंक्रीज द प्रेशर ऑन दिस सॉलिड, if you apply high pressure on this solid, then the atoms try to come close to each other, and therefore more atoms start touching each other, and hence guys the coordination number increases. तो आप यहां नीचे रिएक्शन में देख सकते हो that at high pressure NaCl type crystal gets converted into CsCl type crystal. Now students, the CsCl type crystal has coordination number of 8:8. That means 1 Cs plus will be touching 8 Cl minus and 1 Cl minus will be touching 8 Cs plus. So students, हमें बस इतना समझना है that if you increase the pressure, the atoms of the solid try to come close to each other. That means more atoms will start touching each other, and therefore guys, on increase of pressure the coordination number of solids increases. That means guys, NaCl type crystal will get converted into CsCl type crystal at high pressure. Now students, let's look at the effect of temperature on solids in the next slide. Yes students, this is a very easy slide of the effect of temperature on the structure of solids. Students, you have to understand that the temperature has an effect which is reverse of the effect of pressure. Basically guys, if you increase the temperature of a solid, then the atoms of the solid try to go away from each other, and therefore less atoms will touch each other, and guys therefore the coordination number will decrease. इसका मतलब स्टूडेंट्स, if you increase the pressure, तो atoms of solids will try to come close to each other, and guys if you increase the temperature, then the atoms of the solid will try to go away from each other. So students, आप इस पैराग्राफ में देख सकते हो that at high temperature the CsCl type structure again gets converted into NaCl type structure. Guys, the effect of pressure and temperature is exactly opposite. इसको आप इस रिएक्शन से वापस समझ सकते हो. Guys, आप नीचे रिएक्शन में देख सकते हो that if you are at high pressure, then in that case NaCl type structure gets converted into CsCl type structure. But students, if you are at high temperature, then in that case the reverse case happens. In that case CsCl type structure gets converted back into NaCl. तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बस ये बताना चाहता हूं that if you increase the pressure, then the coordination number increases. But if you increase the temperature, then the reverse effect takes place and the coordination number decreases. यार ये बहुत लॉजिकल है.
अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे सॉलिड पे तो उसके एटम्स एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे. बट स्टूडेंट्स, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, then in that case the atoms will go slightly away from each other. So therefore pressure increase करने पे coordination number increase होता है, but temperature increase करने पे coordination number decrease होता है. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, in this slide we are going to look at the packing efficiency of various types of unit cell. ये मैंने आपको यूनिट सेल के बारे में सिखाते हुए भी बताया था दैट इन द केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग द पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%. Guys, you can observe this in the first row in this table. So basically guys, hexagonal closed packing and cubic closed packing are the most efficiently packed solid structures. Basically guys, ये हमारे बेस्ट पैकिंग है. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोथ हैव अ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 74%. ऑन द अदर हैंड गाइस, इफ यू लुक एट द बीसीसी टाइप यूनिट सेल, इन दैट केस द पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीजेस टू 68%. इसका मतलब स्टूडेंट्स, बीसीसी टाइप जो हमारा यूनिट सेल होता है उसका पैकिंग उतना अच्छा नहीं है. It is good, but it is not as good as the packing of FCC, that is cubic closed packing, or we can say hexagonal closed packing. तो हमारे hexagonal closed packing and cubic closed packing का जो efficiency है वो maximum होता है 74%. हमारे BCC type unit cell का packing efficiency थोड़ा कम हो जाता है which is 68%. And guys, the worst type of packing is the simple cubic unit cell which has a packing efficiency of 52.4%. So guys, हमारा जो simple cubic unit cell है उसमें atoms are only present at the corners of the cube. So there is a lot of empty space between the atoms. तो हमारे simple cubic unit cell में packing efficiency आता है 52.4%. हमारे BCC में packing efficiency improve हो जाता है, it becomes 68%. And guys, you will experience the best packing efficiency in FCC, that is cubic closed packing, or hexagonal closed packing, and this packing efficiency is 74%. अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहां पे जो मिडल कॉलम है उसमें जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू मेमोराइज दीज रिलेशनशिप्स बिकॉज they are frequently asked in all examinations. Okay, so guys, in the CCP, that is FCC type unit cell, the radius of the atom is equal to a upon 2 root 2. Guys, a is the side of the cube, a is the edge length. Guys, मैं आपको फिर से बताता हूं, यहां पे जो रिलेशन है बिटवीन रेडियस एंड ए फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइस, इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दैट इज इन एफसीसी टाइप यूनिट सेल, आर की वैल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन 2 रूट 2. ऑन द अदर हैंड, इन द बीसीसी टाइप यूनिट सेल, द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू रूट 3 ए अपॉन 4. एंड फाइनली गाइस, इन द सिंपल cubic unit cell, the value of R is equal to A by 2. So students, let me tell you the relations one more time. In the cubic closed packing, that is in the FCC type unit cell, the radius of the atom, that is R, is equal to A upon 2 root 2. In BCC, it is R is equal to root 3A upon 4. And guys, in simple cubic unit cell, R is equal to A by 2. Guys, यहाँ पे R is the radius of the atom and A is the side of the cube, or you can also call it as edge length. So in summary guys, in this entire slide we have understood that in hexagonal closed packing and cubic closed packing, packing efficiency is 74%. In BCC, it is 68%. In simple cubic unit cell, it is very low and it is 52.4%. And guys, the relation between radius of atom and the sides of the cube are also given here. So for FCC,
r is equal to a upon 2 root 2. For BCC, r is equal to root 3 a upon 4. And finally, guys, for simple cubic, r is equal to a by 2. Now let's move ahead to the next slide. Yes, people. Now in this slide, we are going to look at how to calculate the density of a unit cell. स्टूडेंट्स, इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है और उसको आप यहां सेंटर में देख सकते हो. द डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल रो इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. गाइस, ये जो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. इन दिस फॉर्मूला जेड इफेक्टिव इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल. मैं आपको याद दिला देता हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में z इफेक्टिव इज 1, इन BCC z इफेक्टिव इज 2 एंड इन FCC z इफेक्टिव इज 4. Guys, m is the molar mass of that element. Guys, whichever element is being considered as the solid, उसका जो molar mass होगा that is m. Guys, a is the side of the cube or we can also call a as edge length. And guys, obviously Na is Avogadro's number, which is equal to 6.022 into 10 to the power 23. So guys, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं. To calculate the density of a unit cell, we have to use this formula. Rho is equal to Z into M upon A cube into Na. In this case, guys, Z is the Z effective, M is the molar mass, A is the side of the cube or A is the edge length of the cube, and guys Na is the Avogadro's number. आपको बस ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सो फॉर वन लास्ट टाइम गाइस, द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल इज Z into M upon A cube Na. Z is the Z effective of that unit cell, M is the molar mass, A is the edge length or the side of the cube, and guys Na is the Avogadro's number. Now let's move ahead to the next slide. Yes, people, now that we have covered various types of unit cells and various types of packings and voids and the different types of radius of cation and anion ratios, now we have to look at the different types of defects in a solid. So guys, the first of these defects is known as Frenkel defect. Students, it is very easy to understand this defect. In this defect, one of the cations leaves its original position and goes and occupies an interstitial site. Basically, guys, Frenkel defect is like one person leaving their own room in their house and going and staying in someone else's room in the same house. सो गाइस, यहां पे जो हमारा कटायन है इट डज नॉट लीव द सॉलिड. मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है. गाइस, फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑल अबाउट अ कटायन लीविंग इट्स ओरिजिनल प्लेस और इट्स ओरिजिनल लैटिस पॉइंट एंड गोइंग एंड ऑक्यूपाइंग सम अदर इंटरस्टिशियल साइट इनसाइड द सेम सॉलिड. तो बेसिकली बस क्या हो रहा है, एक कटायन अपनी ओरिजिनल जगह को छोड़ के सेम सॉलिड में किसी और जगह को जाके ऑक्यूपाई कर रहा है. दिस इज नोन एज फ्रेंकल डिफेक्ट. एंड गाइस, बिकॉज इन दिस डिफेक्ट द कटायन इज नॉट लीविंग द सॉलिड, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इन फ्रेंकल डिफेक्ट रिमेन्स सेम. गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इन वेरियस एग्जामिनेशंस. गाइस, इन फ्रेंकल डिफेक्ट nobody leaves the solid. All that is happening here is that one cation or a few cations are leaving their original lattice point and they are occupying some interstitial site in the same solid. And since no one is leaving the solid, the density of this solid remains same. Students, ये जो Frenkel defect होता है, it is usually observed when your solid has low coordination number and when there is a large difference in size between the cation and the anion. इसको आप यहां पैराग्राफ में रीड कर सकते हो. गाइस, फ्रेंकल डिफेक्ट यूजुअली तब टेक प्लेस करता है when the coordination number
of this solid is less, and when there is a large difference in size between the cation and anion. देखो गाइस, ये काफी लॉजिकल है. अगर आपका कटायन काफी छोटा है एज कंपेयर टू अनायन, then it can leave its original position and it can go and occupy some interstitial site. क्योंकि उसका साइज छोटा है, इसीलिए वो किसी और छोटी सी जगह में फिट हो सकता है. सो वेन एवर देर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज बिटवीन कटायन एंड अनायन, you can observe Frenkel defect. And guys, the most important point in this slide is that in Frenkel defect the density remains same. Guys, यहाँ पे कोई भी कटायन सॉलिड को छोड़ के बाहर नहीं जाता. The cation is only leaving its original lattice point and it is going and occupying some other interstitial site. So guys, let's move ahead to the next slide in which I will show you the diagrammatic representation of Frenkel defect. Yes people, as you can observe in this diagram, in the Frenkel defect, one of the cations, that is A plus, has left its original position and it is going and occupying some other interstitial site. Guys, आप यहाँ diagram में देख सकते हो that in the second row, in the second place, A plus is missing and this A plus is present in the space in the third square box at the top. Basically guys, यहाँ पे one of the A plus is leaving its original lattice point and it is going and occupying some intermediate space between other cations and anions. Guys, इसी defect को हम बोलते हैं Frenkel defect. Students, you can also observe the names of a few solids in which Frenkel defect is observed. Let me read them for you. So these solids are ZNS, AgCl, AgBr, AgI. So आप याद रख सकते हो that the halides of silver, AgCl, AgBr and AgI, these are examples of Frenkel defect, and there is one more example, ZNS. Now let's move ahead to the next slide in which we will learn about Schottky defect. Yes students, the second type of defect which we need to learn about is the Schottky defect. In this defect guys, equal number of cations and anions are missing from their lattice points and they are not present anywhere else in the solid. Basically guys, यहाँ पे equal number of cations and anions leave the solid and they are going out from the solid. Guys, ये बहुत ज़रूरी है that equal number of cations and anions leave so that there is zero charge on this solid. And students, because equal number of cations and anions are leaving the solid, तो हम ऐसा बोल सकते हैं that the mass of the solid will become less and therefore the density of the solid decreases in Schottky defect. यारो देखो, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था दैट इन फ्रेंकल डिफेक्ट द डेंसिटी रिमेन्स सेम, बट स्टूडेंट्स हमारा जो शॉटकी डिफेक्ट है इसमें डेंसिटी कीप्स डिक्रीजिंग. गाइस, द रीजन फॉर दिस इज वेरी सिंपल. बिकॉज cations एंड anions are leaving their lattice points and they are going out from the solid, the mass of the solid will decrease and therefore the density of this solid decreases in the case of Schottky defect. Students, इसका logical example बहुत simple है. You can imagine a couple of people from your house leaving their rooms and going and settling in some other city or in some other house. So that room is now permanently vacant. So basically, cations and anions leave their original place or their original lattice point and they go out from the solid. This defect is known as Schottky defect. And guys, Schottky defect is usually observed when you have high coordination number and when the size of cation and anion is almost similar. देखो स्टूडेंट्स, आप ऐसे याद कर सकते हो दैट फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. इन फ्रेंकल डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन्स सेम. इन शॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस. In Frenkel defect, you usually have low coordination number. In Schottky defect, you have high coordination number.
Guys, in Frenkel defect, there is a large difference in size between cation and anion. And now here in Schottky defect, the size of cation and anion is almost similar. So basically guys, जब भी आपके solid में size of cation and anion is similar and you have high coordination number, then there are more chances of having a Schottky defect. Guys, Schottky defect मतलब equal number of cations and anions leave the solid and they go out from the solid. This results in decrease in density of the solid. So let's move ahead to the next slide in which we will look at the diagrammatic representation of Schottky defect. Yes, people, as you can observe in this diagram, equal number of cations and anions are missing from this solid. Guys, यहाँ पे A plus and B minus लापता है. They are not present in this solid. They have left the solid and they have gone outside. And इसी वजह से guys, the density of this solid decreases. आपको ये भी याद रखना है that this defect usually takes place when you have high coordination number and when the size of cation and anion is almost similar. Guys, इसके भी कुछ examples आप नीचे देख सकते हो. The few examples are NaCl, KCl, CSCl and KBr. So basically guys, halides of alkali metals. तो यहां पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो NaCl, KCl, CSCl and KBr. All of these are halides of alkali metals. So students, you can try and remember that when you have halides of silver, it is Frenkel defect, and when you have halides of alkali metals, you usually have Schottky defect. Now let's move ahead to the next slide in which we will look at the next type of defect. Yes, people, in this slide, we are going to look at metal excess defect due to anion vacancy. Students, this is a very easy defect to understand. Guys, नाम में ही लिखा है that there is vacancy of anions. So basically guys, यहाँ क्या होता है, हमारा जो solid है उसमें कुछ anions leave the solid and they go outside. Guys, please try and understand that in Schottky defect, equal number of cations and anions were leaving the solid. यहाँ पे guys cations leave नहीं करते. In this type of defect, only anions leave the solid. And guys, because anions बाहर जा रहे हैं, तो हमारे solid के ऊपर जो charge है वो positive हो जाएगा. And to make sure that the charge on the solid is zero, these anion vacancies will be replaced by unpaired electrons. Guys, ये जो locations हैं जहां से हमारा anion बाहर निकलता है, वहां पे unpaired electrons आ जाते हैं. This is a very interesting type of defect, guys. In this defect of metal excess defect due to anion vacancy, a few anions leave the solid and in place of these anions, you have unpaired electrons. Guys, ये जो locations हैं जहां पे आपके unpaired electrons आते हैं, these locations are known as F centers and these are a primary reason for the color of many solids. Guys, इसके examples आप यहां देख सकते हो that NaCl has yellow color because of this defect, KCl has violet color and guys LiCl has pink color. Guys, बहुत ही ज़्यादा interesting defect है ये. You can imagine this as someone from your house leaving their room and going and settling in some other house or in some other city. And now in that room, you have given it on rent to someone else. Basically, some other person comes and occupies that room. In this case, guys, in the metal excess defect due to anion vacancy, anions will leave their lattice positions. Anions will leave their lattice points and these lattice points will now be occupied by unpaired electrons. यारो देखो, anions के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो अगर anions सॉलिड में से बाहर निकलेंगे तो माइनस चार्ज बाहर चला गया. अब हमें मेक श्योर करना है दैट सॉलिड हैज जीरो चार्ज एंड फॉर दिस टू हैपन, these lattice points from where the anions have left will now be occupied by unpaired electrons. और guys, ये जो lattice points हैं जहां पे unpaired electrons exist करते हैं,
उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। गाइस, एक काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, दैट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई विच पोजीशन। सो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एफ सेंटर्स, एंड बेसिकली गाइस जो आपके अनायंस बाहर निकल रहे हैं उनकी जगह पे ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सो गाइस, दिस इज द रीजन फॉर येलो कलर ऑफ NaCl, violet color of KCl, and pink color of LiCl. Now let's move ahead to the next slide to observe the next type of defect. Yes, people, in this slide we are going to look at metal excess defect due to interstitial cations. Guys, ये ऐसा defect है जिसमें you have extra cations in interstitial sites. अब आप सोचोगे सर इसमें और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या फर्क है? Students, in Frenkel defect, cations leave their original lattice point and they go and occupy some other interstitial site. Guys, यहां पे कोई भी cation अपना original lattice point नहीं छोड़ रहा. No cation is going to leave their original lattice point. In this defect, extra cations are going to come from outside and they are going to occupy interstitial sites बिटवीन अदर एटम्स. गाइस, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कटायंस आ गए तो आपके सॉलिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड टू मेक श्योर दैट न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, टू मेक श्योर दैट द सॉलिड हैज जीरो चार्ज, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन अदर इंटरस्टिशियल साइट्स. देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले स्लाइड में जो हमने देखा था उसमें अनायंस वेर लीविंग द सॉलिड एंड गोइंग आउट, and in place of these anions, unpaired electrons were coming and occupying these positions. ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा. इस स्लाइड में गाइस आपको ये समझना है that nobody is leaving the solid. Guys, in this defect, nobody is leaving the solid. In fact, you have extra cations which come into the solid and they occupy interstitial sites. एंड बिकॉज इन कटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल सॉलिड का चार्ज जीरो रखने के लिए यू विल ऑल्सो नीड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन अदर इंटरस्टिशियल साइट. टू बी ऑनेस्ट विथ यू, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ डिफेक्ट दैट वी हैव डन सो फार. वैसे तो ये भी बहुत आसान है, बट इन कंपैरिजन टू द अदर 3 डिफेक्ट्स, दिस इज द मोस्ट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स, इन दिस डिफेक्ट extra cations come from outside into the solid, they occupy the interstitial site, and extra unpaired electrons also come and occupy other interstitial site. Guys, इसका एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हो. When ZNO is heated, it loses oxygen and turns yellow due to the chemical reaction which they have given. मतलब आपके पास extra Zn2+ के cations आ जाएंगे और आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे. बेसिकली गाइस, दिस डिफेक्ट इज अबाउट हैविंग एक्स्ट्रा कटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स एंड हैविंग एक्स्ट्रा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन अदर इंटरस्टिशियल साइट्स. सो गाइस, विद दिस वी कंप्लीट ऑल द मेजर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes, students, we are almost at the end of this chapter. And now we need to understand about the different type of crystal systems of solid. Guys, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और ये पूरा मेमोराइजेशन बेस्ड स्लाइड है. So I will just read the different things for you. Basically guys, the first type of crystal system is cubic. आज के लेक्चर में हमने मेनली इसी पे फोकस किया है. अगर आपका ध्यान है, वी हैव लर्नड अबाउट सिंपल क्यूबिक, वी हैव लर्नड अबाउट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, वी हैव लर्नड अबाउट फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC. तो हमारा मेन फोकस क्यूबिक पे ही है, बट गाइस उसके अलावा भी अलग क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. सो गाइस, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल. स्टूडेंट्स, हम सबको पता है दैट इन अ क्यूब ऑल साइड्स आर इक्वल. सो यहां पे आप सेकेंड कॉलम में देख सकते हो दैट इन क्यूबिक A is equal to B is equal to C. That means all the sides, all the 3 dimensions of this crystal system are equal. In the third column, guys, you can also observe the angles.
गाइस हम सबको पता है दैट इन अ क्यूब ऑल द एंगल्स बिटवीन ऑल द साइड्स इज 90 डिग्रीज। तो इसीलिए गाइस ये जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है ये सबसे इजी वाला क्रिस्टल सिस्टम है। इन दिस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम all sides are equal, a equal to b equal to c, and all angles are equal as well as 90 degrees. That means alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degrees. Guys इसको याद करना बहुत ही आसान है। a equal to b equal to c, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degrees for cubic crystal system. Guys the next crystal system is tetragonal. Students, in tetragonal crystal system, two of the sides are equal, but the third side or the third dimension of this crystal is not same. तो guys आप देख सकते हो in tetragonal you have A equal to B not equal to C. But students in this case as well all angles are equal and they are equal to 90 degrees. तो students हमारे tetragonal में A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी आ जाएगा, बट एंगल्स में यू विल हैव अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो स्टूडेंट्स हमारे क्यूबिक और टेट्रागोनल में क्या फर्क है? देर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन क्यूबिक एंड टेट्रागोनल। गाइस क्यूबिक और टेट्रागोनल दोनों में ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, बट द डिफरेंस इज टेट्रागोनल में ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. In the tetragonal crystal system, you have A equal to B, not equal to C. Then guys, the third type of crystal system that we have is rhombohedral. Guys, in rhombohedral, all the sides are equal, A equal to B equal to C. All the angles are also equal, alpha equal to beta equal to gamma, but these angles are not equal to 90 degrees. स्टूडेंट्स क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में और भी कम फर्क है. देर इज ओनली स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स. एक बार हम फिर से कर लेते हैं गाइस. क्यूबिक में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज. गाइस टेट्रागोनल में टू साइड्स आर इक्वल and all angles are equal and they are equal to 90 degrees. And finally guys, in rhombohedral, all sides are equal, all angles are also equal, but they are not equal to 90 degrees. तो यारो क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में बस इतना फर्क है that in cubic all angles are equal and they are equal to 90 degrees, but in rhombohedral all angles are equal but they are not equal to 90 degrees. So guys, apart from these three crystal systems, we have four more crystal systems which we will observe in the next slide. Yes people, in this diagram or in this slide you can observe the remaining four types of crystal systems. Guys, the fourth type is orthorhombic. In orthorhombic, all the sides are unequal, A not equal to B not equal to C, but all angles are equal and they are equal to 90 degrees. So students, ये आपको याद करना पड़ता है. मैं आपको लास्ट स्लाइड के फिर से एक बार बता देता हूं. In cubic, all sides are equal, all angles are equal and they are equal to 90 degrees. In the second one, that is tetragonal, all sides are not equal, A equal to B not equal to C होता है उसमें, but all angles are equal and they are equal to 90 degrees. In the third system, that is rhombohedral, all sides are equal, all angles are also equal, but all angles are not equal to 90 degrees. अब guys यहाँ पे हमने fourth type of crystal system देखा है, orthorhombic. In orthorhombic, none of the sides are equal, A not equal to B not equal to C, but all the angles are equal and equal to 90 degrees. Guys, the next type of crystal system is monoclinic. Monoclinic is similar to orthorhombic. Monoclinic में guys, all the sides are unequal, A not equal to B not equal to C. Two of the angles are equal, alpha equal to gamma equal to 90 degrees, and the third angle is not equal to 90 degrees. तो बेसिकली गाइस ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में ज्यादा फर्क नहीं है. इन बोथ ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, A not equal to B not equal to C,
And the difference is that in orthorhombic, all angles are equal and equal to 90 degrees. But in monoclinic, two angles are equal and equal to 90 degrees, but the third angle is not 90 degrees. And then guys, we have triclinic and hexagonal. ट्राइक्लिनिक इज लाइक द वर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. उसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता, ऐसा आप याद कर सकते हो. गाइस, ट्राइक्लिनिक इज अमॉन्ग द इजीएस्ट टू रिमेंबर. इन ट्राइक्लिनिक, none of the sides are equal, a not equal to b not equal to c. None of the angles are equal, alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90. So guys, ट्राइक्लिनिक सबसे आसान है. उसमें साइड्स भी इक्वल नहीं होते, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c. एंड गाइस, उसमें एंगल्स भी इक्वल नहीं होते, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा. एंड फाइनली गाइस, द लास्ट क्रिस्टल सिस्टम दैट वी हैव इज हेक्सागोनल. हमने जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किया था उसमें हमने ये देखा था. गाइस, इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इन हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, टू ऑफ द साइड्स आर इक्वल, a इक्वल टू b, बट द थर्ड साइड इज नॉट इक्वल टू दीज टू साइड्स. तो आप देख सकते हो हेक्सागोनल में हमने लिखा है a इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c. एंड गाइस, इन हेक्सागोनल, टू ऑफ द एंगल्स आर 90 डिग्रीज, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंड द थर्ड एंगल दैट इज गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. सो गाइस, इन समरी, क्यूबिक इज द बेस्ट सिस्टम. उसमें सब कुछ इक्वल होता है, एंगल्स भी, साइड्स भी, और एंगल्स 90 भी होते हैं. ट्राइक्लिनिक इज द वर्स्ट सिस्टम. उसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता, साइड्स भी इक्वल नहीं होते और एंगल्स भी इक्वल नहीं होते. रोम्बोहेड्रल इज लाइक क्यूबिक ओनली. रोम्बोहेड्रल इज सिमिलर टू क्यूबिक. ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, but all angles are just not 90 degrees. And then guys, we have also seen that orthorhombic and monoclinic are very similar. Orthorhombic and monoclinic दोनों में all sides are unequal, and the difference is that in orthorhombic all angles are same and they are equal to 90, whereas in monoclinic two angles are same and equal to 90 and the third one is not equal to 90. Now guys, let's move ahead to the last slide of this chapter, in which we will look at the different type of structures of various compounds. Yes students, in this last slide we are going to look at the various lattice structures of different types of compounds. Let's start with the first one, that is NaCl. Guys, this structure type is also known as rock salt structure, and in this NaCl type structure guys, the anion forms FCC type unit cell. Guys, आप कॉलम नंबर 3 में देख सकते हो that in NaCl FCC type unit cell is present. तो guys, NaCl में जो हमारा anion होता है that is Cl minus, it forms FCC type unit cell, and जो हमारे Na plus के ions होते हैं they occupy all octahedral voids. Guys, इसको आप कॉलम नंबर 2 में देख सकते हो. Let me explain one more time. Guys, we have started with the first structure of NaCl, which is also known as rock salt structure. So guys, rock salt structure में chlorine minus, which is the anion, will form FCC type unit cell, and Na plus, which is the cation, will occupy all octahedral voids. Guys, इसका coordination number भी लिखा है in the last column, and this coordination number of Na plus and Cl minus is 6:6. That means one Na plus is touching 6 Cl minus and one Cl minus is touching 6 Na plus. Guys, the second structure is CsCl type. So in this CsCl type structure, the anion forms simple cubic unit cell. गाइस, हमारा जो CsCl टाइप स्ट्रक्चर है दैट इज द सेकेंड स्ट्रक्चर, इसमें जो हमारा अनायन है क्लोरीन माइनस, इट फॉर्म्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. एंड स्टूडेंट्स, हमारा जो Cs प्लस है विच इज द कटायन, इट ऑक्यूपाइज द बॉडी सेंटर. इन दिस केस गाइस, द कोऑर्डिनेशन नंबर is in the ratio 8:8. This means guys, one Cs plus will be touching 8 Cl minus and one Cl minus will be touching 8 Cs plus. Guys, मैं आपको पहले दोनों स्ट्रक्चर वापस से बता देता हूं. NaCl में आपके पास FCC होता है,
CaCl में आपके पास सिंपल क्यूबिक होता है. NaCl में cation occupies all octahedral voids. याद करो गाइस, नंबर ऑफ octahedral voids इज Z इफेक्टिव. एंड गाइस CaCl में हमारा जो cation है, इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी void, it occupies the body center. Moving ahead guys to the third structure, which is ZnS. It is also known as sphalerite structure. Guys, in this ZnS structure, our anion again forms FCC type unit cell. But guys, in this case, हमारा जो cation है Zn2+, it does not occupy all octahedral voids. In this case of ZnS type structure, our cation occupies alternate tetrahedral voids. तो गैस ये जो हमारा ZnS का स्ट्रक्चर है, इसमें anion forms FCC and guys cation will occupy alternate tetrahedral voids. In this structure guys of ZnS, the coordination number is in the ratio 4:4. That means every Zn2+ will be touching 4 sulfur 2- and every sulfur 2- will be touching 4 Zn2+. तो गैस अभी तक जो किया उसका समरी कर लेते हैं. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज NaCl. In NaCl you have chlorine minus in the form of FCC and Na+ occupy all octahedral voids. Guys, in the second structure of CaCl you have Cl- in the form of simple cubic and Cs+ occupies the body center. Guys, in the third structure of sphalerite ZnS, you have anion that is sulfur 2- as FCC and the cation Zn2+ will occupy alternate tetrahedral voids. Guys, आप याद करो, number of tetrahedral voids is 2 into Z effective and number of octahedral voids is Z effective. तो यहाँ पे guys NaCl में all octahedral voids are occupied और guys ZnS में alternate tetrahedral voids are occupied. ZnS में all tetrahedral voids are not occupied. Please understand this. ZnS में alternate tetrahedral voids are occupied. And guys, finally the last two structures. We have fourth structure as CaF2, which is known as fluoride structure. In this case guys, our anion again forms simple cubic. That is F- fluorine will form simple cubic. And guys, our cation, that is Ca2+, will occupy alternate body centers. गाइस देखो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि CaCl एंड CaF2 इनका स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है. गाइस यहां पे आप सेकेंड और फोर्थ स्ट्रक्चर को देखो, बहुत सिमिलर है. इन बोथ सेकेंड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर्स यू हैव द अनायन इन द फॉर्म ऑफ सिंपल क्यूबिक. गाइस CaCl के केस में the cation is occupying body centers, basically all body centers, whereas guys fluoride structure number 4, उस केस में calcium 2+ is occupying alternate body centers. And finally guys, the last structure, that is Na2O, which is known as anti-fluoride structure. In this case our anion again forms FCC and guys in this case our cation will occupy all tetrahedral voids. यारो देखो, इसको याद करना सच में बहुत आसान है. NaCl में FCC होगा एंड ऑल octahedral voids will be occupied. फिर स्ट्रक्चर नंबर 3 ZnS में भी FCC होगा, पर इसमें Zn2+ will occupy alternate tetrahedral voids. एंड गाइस Na2O जो लास्ट में है, उसमें फिर से FCC होगा एंड उसमें Na+ will occupy ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो आपको यह याद रखना है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होते हैं एंड गाइस एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर Na2O में ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होते हैं. तो गाइस यहां पे स्ट्रक्चर नंबर 1, 3 एंड 5 आर सिमिलर एंड गाइस स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 4 आर सिमिलर. इन स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 4 you have simple cubic unit cell and the difference is that CaCl के स्ट्रक्चर में Cs+ occupies all body centers and guys fluoride वाले स्ट्रक्चर में CaF2 में calcium 2+ occupies alternate body
centers. सो गैस इसी के साथ हमारे पूरे चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव मोर कंसेप्चुअल पार्ट्स इन द चैप्टर जो आपको सेल्फ रीडिंग करना है. All the important parts on which most of the questions are asked in the examination have been covered in this video. So even if you do this much, this is enough for you. I hope guys you enjoyed this lecture. I hope you had a lot of fun in understanding all the concepts, and I will see you in the next video guys.